I think we are live now. So, hello everyone. I hope you all are doing amazing and your Hacktoberfest is also doing amazing. And to make it more amazing, SheBuilds is back with another session on enhancing efficiency with GitHub Codespaces. If you are someone who just heard the word GitHub Codespaces for the first time, don't worry, we have our speaker Ayush Kumar with us, and he will be helping you out how you can enhance efficiency using GitHub code spaces. And looking to see you in the session itself. Over to you, Ayush. Yep, I'm audible. Yeah, you are audible. Okay, so hello everyone. My name is Ayush, and currently I'm working with TechLatest.net as a developer advocate, and I'm also building India's largest AI community, that is OpenGig. Okay, and we will talk about that stuff also. Apart from this, I am GitHub campus expert, AWS community builder. In the past, I'm working with 5 to 6 startups on different roles like software development, open source engineer, and I'm also Google Summer Codespaces developer in 2022. And yep, that's all about me. Like I love to build stuff, and I like to build stuff in web dev, DevOps, these all stuff. And currently, I'm also doing 70 hard day challenge. Like I'm sharing content on different topics like web dev, DevOps, roadmaps, open source, development, and community management. Yeah, that's all about me. So yeah, I'm also 2023 graduate from ABC College Gaza. So that's all about. Okay, so start करते हैं session. भावना, I think. Okay. Okay, so yeah, good to go. First, we will talking about basically like आज क्यों यहाँ पे हम session ले रहे हैं. Plus, we will also talking about basically about code space. Actually, में what is GitHub code space? Like how you make dev environment, how you uh, make dev environment in less time with GitHub code space. Apart from this, we will talking about some social media platforms, and also we will see like how GitHub Codespace help you in open source journey, in open source contribution, and we will little bit talk about also Hacktoberfest basically. Okay, so currently Hacktoberfest is ongoing, and a lot of open source organization are taking part in Hacktoberfest program. So basically, for open source contributions, a lot of community people, or a lot of open source contributors take part as a contributor. Okay, so basically, like it is a very good program for beginners like you and any other, and also if you are experienced in open source, then you can also contribute. Okay, and today we're talking about GitHub Codespace. Basically, actually, what is Codespace? Like how you set up dev environment code base, and in also like how you contribute to open source in less time, how you set up dev environment in less time, these all the stuff. Okay, so let's start. Yeah. Basically, what is GitHub Codespace? This is the overview. Actually, like what is GitHub Codespace? So, Codespace is a development environment that hosted in the cloud. GitHub is a very GitHub is a very good platform, or you can say GitHub is a platform where you can store your repositories, your host your repositories, these all things. Okay, so basically one of the future that GitHub release, or one of the thing that GitHub releases Codespace, uh, uh, from Codespace you can set up your dev environment in less than a minute and start contributing or start development. Okay, so basically Codespace is a development environment that hosted in the cloud. Basically it is hosted on the cloud. Okay, you can customize your project for GitHub Codespace by committing contribution file to your repository, often known as configuration as code. Okay, which creates a repeatable Codespace configuration for all users of your project. So basically, यार, if I tell you about मतलब मैं अगर हिंदी में बोलूँ, so basically I will explain in both the language. Okay, हिंदी में भी बताऊंगा and English में भी बताऊंगा. So basically Codespace क्या है कि for example if you set up any project on your local machine or on your local computer, ठीक है, that takes so much time. For example, if you set up any React project, okay, so that takes a lot of time to set up, like you install additional libraries or npm, you also install npm and these all things. ठीक है, so basically तुम्हें सब अलग से करना पड़ता है, like install करना पड़ता है, और also उसमें तुम्हारी जो लैपटॉप की जीबी होती है, रैम होती है, वो सब यूज होती है. ठीक है, but for example if you use Codespace, so Codespace is created environment on a browser.
ठीक है. Basically it will set up the environment or dev environment on browser. Like अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल करके भी बताऊंगा बेसिकली कैसे तुम्हें सेटअप करना है सारी चीजें. ठीक है. So we will read some, like थोड़ा सा और देखते हैं. Each code space you create is hosted by GitHub in a Docker container running on a virtual machine. You can choose from a selection of virtual machine types from 2 cores, 8 GB RAM and 32 GB storage, up to 32 cores and 64 GB RAM and 128 GB storage. These all are the things that like you can use, like जो 8 GB की RAM होती है, 32 GB storage, ये सारी चीजें. ठीक है. Basically the code space, if you create any code space that is hosted by GitHub, so एक वो Docker container में basically create होता है. ठीक है. मतलब इस लाइन का ये मतलब है. So यार अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले ना, मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोड स्पेस समझाना है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, सो तुम क्या समझाओगे कि कोड स्पेस इज अ थिंग कि बेसिकली दैट कैन क्रिएट अ एनवायरनमेंट, डेव एनवायरनमेंट. मतलब वो अलग से डेव एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है ऑन ए ब्राउजर एंड यू कैन कोड. मतलब तुम वहां पे कोड कर सकते हो बेसिकली. ठीक है. एंड देन वहां पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं. इवन मतलब तुम्हें कोई भी एडिशनल लाइब्रेरीज मतलब तुम्हें वो सब इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ यू सेटअप अ रिएक्ट प्रोजेक्ट और नोट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो तुम्हें वहां पे नोट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा. देन यू कैन इंस्टॉल npm दीज ऑल थिंग्स एंड प्लस एडिशनल लाइब्रेरीज. ये सारी चीजें इंस्टॉल करनी पड़ेंगी. ठीक है. तो कोई कोई प्रोजेक्ट में तुम्हें कोड स्पेस पे भी इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है. बट द थिंग कि अगर तुम कोड स्पेस को सेटअप करते हो तो वो ऑलरेडी चीजें अपने आप इंस्टॉल कर देता है. ठीक है. एंड समटाइम्स तुमको इंस्टॉल करनी भी पड़ती है. बट यार द बेनिफिट ऑफ कोड स्पेसिस कि तुम्हें अलग से कोई चीज मतलब पूरा सेटअप डाउनलोड करो, ये सारी चीजें नहीं करनी पड़ेंगी जो एडिशनल स्टेप्स होते हैं बेसिकली. सो दैट्स व्हाई लाइक वी कैन यूज कोड स्पेस. ओके. एंड like we will see a lot of stuff also, like by default code space are created from an Ubuntu Linux image that includes a selection of popular languages and tools, but you can use image based on Linux distribution of your choice and configure it for your particular requirements. Regardless of your local operating system, your code files will be run in a Linux environment. Windows and macOS are not supported operating system for the remote container. Okay. For example, if you set up कोड स्पेस, ठीक है, मतलब तुम्हें अगर लोकल कंप्यूटर पे भी सेटअप करना है, ठीक है, तो बेसिकली इट इज नॉट रन ऑन ए विंडोज और मैकोस, बट इफ यू आर अ लिनक्स एनवायरनमेंट और लिनक्स मशीन, सो इट विल सेटअप, मतलब उस पे चलेगा. बट यार वो चीज करने की जरूरत नहीं. यू कैन ऑन सेटअप ऑन ब्राउजर, वहां से यू कैन कंट्रीब्यूट और वहां पे वो कोड कर सकते हो. ठीक है. सो यू कैन कनेक्ट टू योर कोड स्पेस फ्रॉम योर ब्राउजर, जो चीज मैंने बताई बेसिकली. ब्राउजर फ्रॉम विजुअल स्टूडियो, you can also set up from Visual Studio Codes from the JetBrains Cat application or by using GitHub CLI. Okay. When you connect, you are placed within the Docker container. You do not have access to outer Linux virtual machine host. So basically, this is the architecture, you can say, like VS Code installation. Like basically, when you set up on a code editor, VS Code desktop local installation, VS Code browser, Chrome, Safari, Edge, JetBrains, these all things. Plus GitHub commands, you can also set up via GitHub CLI. Okay. So basically, these are the virtual machine that you set up, clone of your repository languages and extension, these all things. Okay. You can like take overview from this page, like docs.github.com/en/codespace/overview. So this will show you the basically the architecture of codespace, like how actually codespace works. Okay. I will put up a link in the chat box. Okay. So Bhavna, put this link in the जो वहाँ पे ऑडियंस बेसिकली ये लिंक को कर पाए, देख पाए, ठीक है, वहाँ पे डाल दें. And the next thing is key benefits of Codespace. Reason for choosing to work in a Codespace: use a pre-configured development environment. You can work in a development environment that is especially configured for the repository. It will have all the tools, languages. जो कि मैंने बेसिकली बताया, तुम्हें एडिशनल चीजें कुछ नहीं इंस्टॉलेशन करने की जरूरत है. ठीक है. इट विल हैव ऑल ऑफ द टूल्स बेसिकली. उसमें सब कुछ कॉन्फ़िगर होता है बेसिकली. ठीक है. लाइक दैट इज कोड रेडी इन्वायरमेंट एंड यू कैन सिंपल तुम्हें कोड करना है वहां पे, दैट इज कोड रेडी इन्वायरमेंट. Okay, everyone who works on the repository in a code space will have the same environment. This reduces the likelihood of
environment related problem occurring and being difficult to develop. ठीक है, बेसिकली बहुत सारी चीजें होती हैं. फॉर एग्जांपल इफ यू सेटअप एनवायरनमेंट ऑन योर लोकल मशीन और लोकल कंप्यूटर और कहीं पे भी बेसिक, ठीक है. सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, मतलब विंडोज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, सेटअप करने में बहुत दिक्कतें आती हैं. सो बेसिकली ये सारी चीजें तुम्हारा लाइक बेनिफिट यही होता है कि अगर इफ यू यूज गिटहब कोड स्पेस तो मतलब ये सारी चीजें नहीं आती, वहां पे प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे बेसिकली. दिस द लाइन इज लाइक इसी का मतलब ये है बेसिकली, दिस रिड्यूसेस द लाइक्लीहुड ऑफ एनवायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम अकरिंग and being difficult to develop. ठीक है. So each repository can have settings that will give our contributors are ready to use fit for purpose environment, and the environment on your local machine will be unchanged. Okay. Next thing is access the resource you need. Your local computer may not have the following power or storage space you need to work on a project. So GitHub Codespace allows you to work remotely on a machine with adequate resources. Okay. Sometimes you have not space problem, on your computer, RAM problem or something problem. Okay. So GitHub Codespace allow you to work on directly browser. ठीक है, वो कोई तुम्हारा मशीन का वो नहीं ले रहा है. Simply you can work on browser. वहाँ पे setup करो Codespace and you can work on browser. ठीक है, वर्क एनीवेयर, ऑल यू नीड इज वेब ब्राउजर, जो कि मैंने बताया बेसिकली इट इज वर्क ऑन वेब ब्राउजर. यू कैन वर्क इन अ कोड स्पेस ऑन योर ओन कंप्यूटर, ऑन अ फ्रेंड लैपटॉप और ऑन अ टैबलेट. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट. लाइक तुम कहीं से भी कुछ वर्क कर सकते हो, इवन इफ यू हैव योर फ्रेंड लैपटॉप और कुछ भी, ठीक है, तो यू कैन वर्क, और टैबलेट वगैरह से भी कर सकते हो, वर्क ऑन ए कोड स्पेस. ठीक है, ओपन योर कोड स्पेस एंड पिक अप फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ ऑन अ डिफरेंट डिवाइस. ठीक है, सेम इट इज लाइक अ VS कोड. अगर तुम VS कोड पे कोई कोड छोड़ते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू लेफ्ट समथिंग ऑन VS कोड, लाइक तुमने आधा कोड करके छोड़ दिया, तो यू कैन स्टार्ट अगेन. ठीक है, फिर से तुम्हें स्टार्ट करना पड़ता है. देन सेम थिंग इज हियर. लाइक तुम्हें बस व्हेन यू क्रिएट एनवायरनमेंट ऑन कोड स्पेस और व्हेन यू क्रिएट डेव एनवायरनमेंट ऑन कोड स्पेस, ठीक है, तो इट विल क्रिएट अ एनवायरनमेंट और समथिंग स्टफ. ठीक है, वो क्रिएट कर देगा बेसिकली. जब तुम्हें अगर कोड स्पेस को फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टॉप कोड स्पेस, देन इट विल स्टॉप. ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगा. देन यू कैन रीस्टार्ट अगेन, मतलब जब तुम्हें दोबारा से करना है बेसिकली. ठीक है. So choose your editor, work in the browser in the VS Code web client, or choose from a selection of desktop based application. ठीक है, for example it is default process होता है, वो तुम्हें VS Code देता है, but you can also choose from a selection of desktop based application. तुम JetBrains और भी चीजें यूज कर सकते हो. Next thing is work on multiple projects. You can use multiple code space to work on separate projects or on different branches of the same repository. ठीक है, compartment your work to avoid changes made for one piece of work accidentally affecting something else you're working on. ठीक है, you can also even create a branch or these things on code space. मतलब सेम थिंग अगर जो तुम वहां पे कर रहे हो बेसिकली गिट से कर रहे हो या सारी चीजों से कर रहे हो, so you can create a code space. मतलब वो सारी चीज तुम code space भी कर सकते हो. There is terminal also in code space. I will show you all things. ठीक है, मैं सब कुछ अभी दिखाऊंगा बेसिकली. Then next thing is pair program with a teammate. ठीक है, if you work on code space in VS Code, you can use live share to work collaboratively. This is one of the best feature that I love. Like you can use live share. There are live share options also to work. Basically, you collaborate on some project with your friends, with your community. Okay, so that's why like for that purpose you can also use GitHub Codespace. ठीक है, basically pair programming, like जिसको हम pair programming कहते हैं. ठीक है, publish your web app from a code space. This is one of the best feature also. Like you can also publish your web apps from a code space, forward a code from a code space, and then share the URL to allow teammates to try out the changes you have made to the application. Okay, before you submit those changes a pull request. So try out a framework. GitHub Codespace reduces the setup time when you want to learn a new framework. Just create a Codespace from one of the quick start templates. So yeah, if you like want to learn a new framework, there are a lot of frameworks are also available. If you are not specified, or you are not married to one technology. Okay, there are like if you work on some projects, so you have multiple things, like back end में कुछ चल रहा होता है, front end में कुछ चल रहा होता है, even also some like deployment पे कुछ चल रहा होता है, so you learn lot of stuff or you learn lot of things. ठीक है, so that's why like GitHub Codespace helps to reduce the setup time. ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि सेटअप टाइम बचाता है बेसिकली व्हेन यू वांट टू लर्न अ न्यू फ्रेमवर्क. सो सिंपली यू कैन क्रिएट अ कोड स्पेस फ्रॉम द क्विक टेम्पलेट्स. ठीक है, यहाँ पे तुम्हें टेम्पलेट्स भी देंगे. ओके, नेक्स्ट थिंग इज give me a minute. Okay, using GitHub Codespace. So okay, to begin developing using cloud-based compute resource, you can create a code space from a template or from any branch.
or commit in a repository. ठीक है? This is a very simple process. When you create a code space from a template, you can start from a blank template or choose a template suitable for work you are doing. ठीक है? You can use like you can choose templates from here. Or also यार basically if you are on a some project or if you are on a any project, so simple वहां से भी तुम code space को like create कर सकते हो. अभी मैं option दिखाता हूँ बस. ठीक है? Like this is one of the community. It's my community Focus Force. Okay, we will take one project that is demo review. Okay, and in so uh, so basically to get started with your code space, see like these all are the guidelines you can go through this docs or something. Okay, for more like deeper understanding of code space, like how you use code space or something. Like I will also show you in the session, like how you actually create a code space environment, how you use a code space. Okay, so this is all about code space, basically how you use code space or like how you like use code space and like कम टाइम में बेसिकली क्या कर सकता हूँ सारी चीजें. देन दिस इज द बिलिंग पार्ट, लाइक दैट इज नॉट फॉर यू. ओके, बिलिंग वाला सीन नहीं होता है बेसिकली. Like billing is for like if you are in one organization or something stuff, so bill wala hota hai. Like basically there are more additional features for a organization, so like they are using Codespace. मतलब अब मेरे को उतना आइडिया नहीं है कि like for example they are using or not, but if you are like do dev on more bigger purpose or for on a more bigger level, okay, so that's why like the billings things are. Okay, so now we will use GitHub Codespace. You go on a one repository on GitHub. ठीक है? GitHub पे जाओ, एक repository choose करो. For example, if you want to contribute in open source or if you want to contribute in Hacktoberfest, ठीक है? वहाँ पे तुमने repositories choose करी, then you can click on code button. ठीक है? There are a lot of options are here. HTTPS option, SSH option. ठीक है? Download zip file option. You can also download the project from zip file. ओके, सो लाइक यू कैन सिंपल फॉर एग्जांपल जब तुम पहले करते थे फॉर एक तुम्हें क्लोन करना पड़ता था, फोक करना पड़ता था, you can get clone repository from this URL HTTPS address. Now you can do one thing, you can see the option of code space here. ठीक है, simple click on this option. After this you can see your code workspace in the cloud. ठीक है, basically it will create the cloud environment or dev environment. ठीक है, so simple you did not have any code space with this repository, check out. ठीक है, so what you can do, uh, like you can click on this button, create code space on me. ठीक है, this is the default branch. I think branch वाला जो चीज है वो clear होगा. Basically this is the main branch. Default branch is the like default branch or something, you can say it is the main branch of the repository. जो मतलब सबसे proper branch होती है repository, that is called default branch. ठीक है, जहाँ पे पूरा कोड तुम्हारा बेसिकली होता है प्रोजेक्ट का. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू क्रिएट एनी अदर ब्रांचेस, जैसे यहाँ पे कोई ने क्रिएट करी एट वेजेस टू रीडमी. ठीक है, सो यू कैन आल्सो क्रिएट ब्रांचेस फ्रॉम गिट कमांड्स और समथिंग स्टफ. ठीक है, सो यू कैन क्रिएट अ ब्रांच और मतलब जब मेंटेनर्स उसे रिव्यू करके मर्ज करेगा, दैट इज मर्ज इन मेन ब्रांच. ठीक है, डिफॉल्ट ब्रांच में हो जाएगा. For example, if you work on some front end project, ठीक है, or any other person work on back end thing. If you design a website, you work on front end project, one person is work on front end back end project. ठीक है, and there is main branch that is default branch called full stack. ठीक है, for example, so तुमने एक front end code create करा, then you can create a code or pull request on a back end. ठीक है, एंड देन तुमने उसे पुल कर दिया, एंड देन आफ्टर दैट वो जो जाएगा मेन जो रिव्यू होके मेंटेनर रिव्यू कर लेगा, देन इट कैन मर्ज इनटू डिफॉल्ट ब्रांच. दैट इज कॉल्ड फुल स्टैक. हमारी जो मतलब फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, फुल स्टैक के नाम से हमारी डिफॉल्ट ब्रांच थी, दैट इज कॉल्ड बेसिकली मतलब ब्रांचेस जो होते हैं. सो यार आफ्टर क्लिक ऑन दिस बटन sorry, ठीक है, आफ्टर क्लिक ऑन दिस बटन इट विल लाइक क्रिएट अ डेव एनवायरनमेंट ओपन इन कोड स्पेस. ठीक है, सारी चीजें. सो बेसिकली यार एक second, ठीक है, सो दिस इज द repository. ठीक है, इट इज द रीडमी फाइल, आई थिंक इट इज द रीडमी फाइल. वेलकम टू योर organization demo repository. ठीक है, it is the readme file. We will cut this, and after this you can see the HTML file or you can see the package.json file. It is like I think yep.
it is I think created by Codespace or it is the initial commit. You can say anything. ठीक है, जो भी मैंने create करी थी basically कुछ projects होगा. ठीक है. Also it will create node modules. ठीक है, जो मैंने बताया था it will create additional libraries, all things अपने आप basically. ठीक है, सारी चीजें. So like you have not install any additional thing. अगर if you're working on some node project, if you work something on like for example तुम किसी और project पे work कर रहे हो React को, तो ये सारी चीजें अपने आप कर देगी. Sometimes we will also install, मतलब तुम यहाँ पे installation भी कर सकते हो. ठीक है. So यार yep. So like you can see a lot of stuff here, like here you can see, split the terminal, you can see the bash, fish, ठीक है, JavaScript debug terminal. So yep. And next thing is यहाँ पे भी तुम you can see the terminal. ठीक है. You can see lot of stuff, like you can see file options जो कि तुम सारा VS Code में देखते हो. ठीक है. And basically you can create a new terminal. So मतलब यहाँ पे तुम्हारा new terminal चालू हो जाएगा. ठीक है. And the you can also see the main like main वाली जो चीज है वो भी you can see here. Now do one thing, we can add something in this repo. Okay. For example एक contribution करके बताता हूँ. For example h2 file, we will add some h2 file and then we will adding some text. Okay. Today's session today's session on GitHub Codespaces. Okay. So after adding this, मतलब हमने एक file add करा है. If we will add something in our HTML file, then we will have to save this files. And after save, मतलब ये automatically save भी कर लेता है. ठीक है, you मतलब अलग से करने की जरूरत नहीं है. Now next thing is you can see the we are on the main repository, मतलब main वाली branch पे. ठीक है, तो मैं तुम्हें branch create करना नहीं बता रहा हूँ. Basically it is like a different process. We will not follow up on Git and GitHub. So basically we will follow up on Codespace. Okay. So what you do, सिंपल तुम्हें यहाँ से इस कोड को पुश करना है. बेसिकली यू हैव टू मेक अ पुल रिक्वेस्ट टू अवर मेन रेपोजिटरी. ठीक है. सो व्हाट वी डू, हम मेन वाली पे ही काम करेंगे. ठीक है. सो नाउ git add. ठीक है. नाउ वी विल यूज कमांड git add के बाद में git commit add. We will give simple message add code. ठीक है, मतलब हमने कुछ भी ऐड करा. You will use, मतलब तुम अपने हिसाब से चूज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल you work on some projects, so तुम वहां पे कुछ भी ऐड कर रहे हो, then you can simple ऐड कर सकते हो. ठीक है. Now you can enter. ठीक है, मतलब तुम यहाँ पे देख रहे हो यार कितनी सारी फाइल्स ऐड हो गई है. ठीक है. बेसिकली जो इसने एनवायरनमेंट क्रिएट करा था, नोड मॉड्यूल्स आर क्रिएटेड और समथिंग. ठीक है, और एक फाइल हमने जो बेसिकली चेंज करी वो सारा ऐड हो गया है. ठीक है. सो after this git push, थोड़ा सा एक सेकंड आ गया. ठीक है, अभी मेरे को यही था git push. इसको थोड़ा so git push origin and main. ठीक है. So what you can see, मतलब जो भी फाइल्स ऐड हुई, नोड मॉड्यूल्स, ऑल थिंग्स आर क्रिएटेड है, वो ऐड हो चुका है. ठीक है, मेन पे हमने ऐड करा है. इफ यू वांट टू क्रिएट अदर ब्रांचेस, इफ यू वांट टू क्रिएट अदर ब्रांचेस, मतलब तुम्हें किसी और ब्रांच पे ऐड करना है, सिंपल तुम्हें गेट जो भी गेट करके एंड यू कैन क्रिएट अ ब्रांच. ठीक है, और चेकआउट करना है उसके बाद में. यू कैन चेक आउट द ब्रांच की वो अवेलेबल है यार. ठीक है, सिंपल दो स्टेप है, गिट एंड देन ब्रांच का नेम. ठीक है, एंड देन गिट चेकआउट, और वो देन उस ब्रांच पे तुम जाओगे वो ब्रांच क्रिएट हो जाएगी. ठीक है. तो गिट पुश ऑरिजिन में एंड देन गिट. ठीक है यार, अब ये हो गया है शायद. एक सेकंड मेरे को चेक करना पड़ेगा. हाँ, you can see that node modules are there and you can see the changes in the index.html file 1 minute ago. ठीक है. So simple you can run 3 commands. ठीक है, तो यहाँ पे तुम देखो टुडे सेशन ऑन गिटहब कोड्स पे जो हमने कोड ऐड करा था, h2 फाइल we have to add, h2 line we have to add, and then we have also node modules are there. ठीक है. So सारा you can see that कितने कम टाइम में बेसिकली we have do some all things. ठीक है, आराम से हमने सेटअप करा, then you can मतलब पुश करा and then will do things. मतलब how, मतलब कितना यार 2 से 3 मिनट मुश्किल से लगाओ and we will मतलब easily we will do with the
Codespace. So that is basically the benefit of Codespace. The, yeah, it is the but this is the very beneficial for all of you. You can use in your open source contribution. You can use in your project also. Okay. So basically, it is called GitHub Codespace. That's all. If you have any questions, then you can ask me in the chat box or भावना ले लेगी ठीक है अगर कुछ भी questions Hello, am I audible? I think there is some network issues. I'm trying to reconnect, but still it's showing some issues. So thank you, Ayush, for such an amazing session, and hope you guys learn something out of it and learn more about GitHub Codespaces itself. And if you are someone who learned something and would love to share that, so I would highly suggest to do that and share it on social medias like Twitter, LinkedIn, and anyone. And share our speaker Ayush itself is a Twitter personality itself, and she will hack itself. So if you have any questions, you can directly reach out to Ayush on his social media handles. And thank you, Ayush, for taking such an amazing Yep. session. So these are my handles. Okay, you can connect with me on Twitter. This is my Twitter handle, and you can also connect with me on LinkedIn. This is my LinkedIn. Okay. And apart from this, you can also connect with me on GitHub basically. So I use 7614 is my username. Okay. And yeah, that's all for today. And you can also check out my blogs on Hashnode basically. Okay. And like write blogs on various stuff like AI and open source, progressive web apps, DevOps speed. These are this is my Hashnode handle. Simply you can search on Google about I use 7614 Hashnode. Then you can find my Hashnode profile. And apart from this, you can simply search on Google about my LinkedIn profile, Twitter, GitHub profile. I use 7614 is same username for GitHub, and this is my Twitter profile. Okay, it is very long. I use 3875, and apart from this, this is my link. That's all for me.